Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss an important topic that is classification of proteins on the basis of structure. So let's move to the whiteboard. So classification of proteins or it may be asked as the types of proteins on the basis of structure. तो स्टूडेंट्स ये वो दूसरा क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन चूँकि बहुत अहम है, दोनों क्वेश्चन बहुत अहम है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी या टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर आस्क्ड about the structure of protein, so then you have to try the primary, secondary, or if they are specifically asked कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तब भी उसी तरह से प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, या फिर वो स्पेसिफिकली जो भी आपसे पूछा जाए। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड टेल द क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेन or describe the classification of proteins or explain the types of proteins on the basis of structure, तो dear students जो अब पढ़ने लगे हैं आज के लिए इस लेक्चर में वो आपने लिखना है। क्लियर? टाइप्स में या क्लासिफिकेशन में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं करना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने गौर से नहीं क्लासेस ली होती वो ऐसे ही करते हैं कि पूछा जाता है क्लासिफिकेशन तो वो लिख देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, या टाइप्स पूछा जाता है तो लिख देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी। So make it clear that classification doesn't mean the primary, secondary, and tertiary. Clear? That are the levels of organization of proteins, or they are the structures of protein. Okay. So, dear students, the proteins are very complex molecules due to their number of amino acids and due to various functions. And it is very difficult to classify proteins or on the single basis. So that's why कि फंक्शन की बेस के ऊपर, फंक्शन के एतबार से फंक्शनल प्रोटीन्स बहुत सारी हैं, बहुत मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कुछ हमने बात की थी कुछ चंद अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, कुछ होती है वो 3000 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा से मिलकर के बन सकती हैं, इसलिए उनको इस तरह से क्लासीफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो दैट इज़ वाई द प्रोटीन्स कैन बी classified
on the basis of structure. तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर proteins are classified into two major types or classes. Yeah. Number one are the fibrous proteins, and number two are the globular proteins. Clear? So now let's have a look and let's have a difference between them. इनको differentiate करने की कोशिश करेंगे. Over here, the fibrous proteins and the globular proteins. You should also have to give them in a tabulated form. क्योंकि हम इनको comparison में पढ़ने लगे हैं. So that is the reason. Clear? So the first point among the fibrous and globular proteins which you have to differentiate between them is the shape. The first point of difference between them, that is their shape. So as far as their shape is concerned, in fibrous proteins, the fibrous proteins molecule are arranged in the form of fibrils. So जो molecules होती हैं उनकी जो polypeptide chains हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं in the form of fibrils, fibers की शक्ल में. Clear? As far as the globular proteins are concerned, the globular proteins are spherical or ellipsoidal in shape. Clear? So that was the first point of difference between them. Like this. So this is called what we call as fiber.
So these are two polypeptide chains which are coiled in such a way that, so this is what we call as the fiber. This is a keratin fiber. This is keratin protein. While these are either they are spherical like this or ellipsoidal like this. Clear? So this is spherical, like it is the enzyme. They are globular proteins. Inshallah, we will learn in the chapter number 3 that all enzymes, they are globular proteins. Clear? Now, the second point is important structure. The second point of differentiation between them that is the important structure in them. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का फाइब्रस स्ट्रक्चर आपने कहाँ पर पढ़ा है? ज़रा सोचिए, रिकॉल कीजिए, डिटेल के साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझाया था. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट structure in fibrous proteins is, जी स्टूडेंट्स, कहाँ पर पढ़ा था आपने? फाइब्रस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था प्रोटीन्स में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉइल्स बन रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द फाइब्रस प्रोटीन्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. एज फार एज द globular proteins are concerned, the most important structure in globular proteins is, तो जी स्टूडेंट्स, तो ग्लोबुलर शेप कहाँ पर देखिए आपने स्ट्रक्चर में, इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, द 3-dimensional स्ट्रक्चर, द टर्शियरी स्ट्रक्चर. क्लियर? तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में टर्शियरी स्ट्रक्चर अहम है, इसे ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स in their organization. Clear? Now, the third point is crystalline
nature. Means either they can be crystallized or not. That is the third point. So the fibrous proteins, they cannot be crystallized. While the globular proteins, they can be crystallized. Clear? इनको क्रिस्टलाइजेशन इनकी की जा सकती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स की क्रिस्टलाइजेशन आमतौर पर नहीं होती. 3 points. Now the fourth point is elasticity. So as far as the elasticity is concerned, dear students, the fibrous proteins are elastic in nature, or they possess some elasticity, while the globular proteins are usually non-elastic. Clear? So the 4 points. Now the fifth one is their solubility. So as far as the solubility is concerned, the fibrous proteins, they are insoluble in aqueous environment, while the globular proteins, they are soluble in aqueous environment such as the solutions of acids or bases or salts. Clear? So they can be and get dissolved in them. And their examples they are very much important regarding the MCQs point of view. Their examples. Now, as far as the fibrous proteins are concerned, the fiber
of spider or silkworm, रेशम का कीड़ा, या फिर आपने देखा है जो मकड़ी होती है स्पाइडर, वो एक फाइबर सा जो उनका बनता है वो जो जाला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाइक दिस the web formed by the spider that is made up of fibrous protein, ठीक है, so that is its example. Again, one more, the myosin, that is a microfilament, ठीक है, of muscles, हमारे मसल्स जो होते हैं स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक, इंशाल्लाह इन सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 उसमें अब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मायोसिन इस तरह से होती हैं, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड के ऊपर 2 ग्लोबुलर हेड्स होती हैं, दैट इज मायोसिन, क्लियर। और इसी तरह से द केराटिन of nails and hairs, हमारे जो बाल होते हैं, जो नेल्स होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन होती है फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज केराटिन, क्लियर। As far as the global proteins are concerned, its examples include enzymes, as I told you, and you will also learn in chapter number 3 enzymes. Then there are the antibodies. In chapter number 14, the last topic, you will learn the topic of immunity and also the hormones, like the testosterone, estrogen, progesterone. These are hormones. And number 4, we have read the hemoglobin. That is also a globular protein. So as far as their role is concerned, dear students, तो मैं यहाँ पर इनको मैं mention कर देता हूँ role की बात. They have got the structural role and they have got some functional role. Clear? Functional role and they have got structural role. So dear students, hopefully fibrous और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में फ़र्क समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।